बट अ गुड थिंग नो एक्सपोज बीट्स। एक्सेसरी के तौर पे आप क्रैश कार्ड लीजिए और उसको इंसर्ट कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट साइलेंसर इज ऑल्सो चिंटू यूके स्पेसिफिक मॉडल ना डजंट गेट सारी गार्ड। स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहाँ पे मेरे साथ है नई नवीली रॉयल एनफील्ड गरिल्ला 450 एंड रॉयल एनफील्ड बाइक्स हैज सम यूनिक नेम्स इन दियर बाइक्स लाइक द गरिल्ला 450, शॉटगन हो गई, मीटियोर, हंटर, बुलेट, इंटरसेप्टर, unique names that no brand offers you. So yeah, the Guerrilla 450, what all things have changed, what all things are new. Also this bike resembles to many of its sibling bike from its own mother, that is the Royal Enfield. So क्या क्या चेंज किया गया है, इंजन में क्या चेंज है, चलाने में कैसी है, लुक्स वाइज कैसे है, फीचर्स कैसे कैसे कौन से डाले गए, सब कुछ कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस चाबी स्टार्ट करते हैं. चाबी आपको देखिए ऐसे कुछ मिलने वाली है. द सिमिलर की विच यू गेट इन ऑल रॉयल एनफील्ड बाइक्स. सो नथिंग टू टेल मच अबाउट दिस की विच हैज़ द रॉयल एनफील्ड लोगो राइट ऑन द फ्रंट विच हैज़ बीन रीडिजाइंड दैट्स कूल ना. सो नथिंग टू टेल मच अबाउट दिस की. लेट्स कीप दिस असाइड एंड लेट्स कम टू दिस गोरिल्ला 450. गोरिल्ला यूनिक नेम फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, गोरिल्ला 450. सो let's come to the dimensions of this bike now. The length of this bike happens to be 2.1 meters. The width of this bike happens to be 833 mm. The height of this bike happens to be 1.1 meters excluding the mirrors. Okay, and the wheelbase of this bike happens to be 1.4 meters, and the ground clearance happens to be 169 mm, which is huge. So let's insert this key in this motorcycle. Okay, to turn on all the accessories of course. So first things first, basically this bike resembles all its sibling bikes from its own mother, that is the Royal Enfield, but especially the Himalayan 450, the new one, and the Hunter. Himalayan क्यों बोल रहा हूँ? Because this bike, the frame, this bike has been made on the Himalayan platform. First thing. Second thing is that this bike has a lot of stuff which are bit similar to the Himalayan, जो मैं आपको बताऊंगा. So let's come to the front of this bike now. So at the front, side turn indicators are in LEDs, front and rear of course. The headlight, typical Royal Enfield style, which is circular. So Royal Enfield logo right in the center, but a good thing, no exposed beads. Yeah, no exposed beads which the Himalayan used to get, but they have rectified that too. This is of course the accessory for the headlight guard. So piano black, a lot of piano black treatment has been done on this bike. Number plate holder, both high beam and low beam are in LEDs. That's cool. Halogen beads नहीं है, all LEDs. So the rain visor जो अपने windshield जो अपने होते हैं ना, you can add on that as an accessory. The height of this bike has been decreased because telescopic forks of course. Yeah, the Himalayan gets the upside down forks. This telescopic fork has 140 mm of travel and 43 mm is the actual size of the forks. So natural reflector, the front tire size happens to be 120 section 70 R17, which is kind of chintu, nice alloy design. Also this bike has a combination of lot of colors, so that's cool. So purple treatment on the alloys also. So this is of course the fiber beads, not the metal one. So Babe Ray of course. So the front disc size happens to be 320 mm. So Babe Ray of course rated seems to be there. Horn is kind of chintu and you get the accessory जो अपनी वहाँ पे लगाई हुई है. You can install that accessory so that कीचड़ वगैरह ना उड़े इंजन पे. So the engine guard of course. So क्रैश गार्ड ऑफ कोर्स. सो रॉयल एनफील्ड जो अपने हिमालयन में प्रॉब्लम होता था ना, बेसिकली आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड का प्रॉब्लम होता था, चेसी टूट जाती थी, बट रॉयल एनफील्ड हैज़ प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन कि जेन्युइन एक्सेसरी के तौर पे आप क्रैश गार्ड लीजिए और उसको इंसर्ट कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. दैट्स कूल रॉयल एनफील्ड. सो लेट्स कम टू द साइड ऑफ दिस बाइक ना. दिस इज़ वॉट यू गेट एट द साइड ऑफ दिस बाइक. सो the same engine which you get in the Himalayan, 40 PS of power and 40 Newton meters of torque if I'm not wrong. The real change in terms of the chassis happens from here. पहले आपको रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर मिलता था ना, this has been taken off, यहाँ पे किया गया है. So Gorilla written right
Such a unique combination, man. Royal Enfield in purple, 11 liters of fuel filling capacity. The fuel filling is off the set, so that's cool. Basically Royal Enfield की सभी बाइक में आपको यहाँ पर सेंटर में मिलता था, बट दिस इज काइंड ऑफ ऑफसेट. E20 फ्यूल ओनली. यूके में आपको E10 एंड E5 का ऑप्शन था. सो द साइलेंसर इज ऑल्सो Chintu, which is again similar to the Himalayan, of course. 270 mm of disc, rear disc. The rear tire size happens to be 160/60 R17, which is fatter, which is kind of very fat as compared to the front tire. So the foot pegs are in piano black. Yeah, the foot pegs have the Royal Enfield logo right on the foot pegs also. That's unique. So rear brakes, of course, master cylinder for the rear brakes. 6-way adjustable rear monoshock suspension, which has a 150 mm of travel, if I'm not wrong. To open the seat, you can insert the key over here. So unique design, unique color has been used in the Guerrilla 450. Number plate light is in LED, hopefully that's cool. Integrated side turn indicator and tail light, so no separate. So as you get in the Himalayan, the same bits has been offered over here too. Number plate can be installed over here, so natural reflector, of course. Let's come to the side of this bike now. UK specific model now doesn't get the sari guard, but in India ये तो चाहिए ही चाहिए. So sari guard, of course, which has increased the weight, so chain drive, of course. So foot pegs kind of very cool. Side stand, which is huge. So yeah, the seat height is 780 mm. So the seat height is around 780 mm. Grab rails to hold on to. You can also, if you're going off the traveling वगैरह कर रहे हो ना, you can put some luggage stuff of that stuff. So let's come to this stuff. So the clutch is very light. Yeah, that's cool. So this mirrors, you can accessory के तौर पे अपना, you can insert these side mirrors also. A lot of accessories are provided in the Himalayan, sorry, the Guerrilla. Why am I saying Himalayan? The Guerrilla 450. So a lot of accessory range has been provided. So 11 liters fuel tank capacity. So also this instrument cluster is offset like the fuel filling capacity. So as you get in the Himalayan, the similar one you have been offered in the Guerrilla 450. So let's turn off and let's turn on now. Says Guerrilla. Yeah, that's cool. Full swap up. And also in this screen आप ना गूगल मैप्स अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, यू कैन ब्राउज दी गूगल मैप्स टू, बट फॉर दैट ना यू नीड टू कीप योर फोन ऑन, फोन स्क्रीन ऑन. आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी ना. फॉर दैट रॉयल एनफील्ड हैज़ प्रोवाइडेड वन सोल्यूशन. Over here, Type C charging slot also has been provided. That's cool, man. So Type C provide किया है, not the USB one. So that's cool. So let's come to the switches now. So this is to browse the screen. So that's stuff. So high beam, low beam, pass by switch, of course. So side turn indicators, which are integrated at the rear, of course. So this is the joystick to browse onto the screen, this Chintu screen. So kind of very cool joystick. So master cylinder for the front brakes. So this is to start the bike. Engine kill switch. Why is the dog shouting? Engine kill switch. And this, if you press this ना, आप यहाँ पे browse कर सकते हो. So the अभी ये क्यों नहीं हो रहा है यार, जल्दी हो जा, क्यों पोपट बना रहा है. So it's kind of थोड़ा टाइम लगता है. So you need to study all this stuff. So all the stuff सब कुछ बता दे. You can browse, you can customize this screen too. That's cool ना. So this is for the hazard light, which has been turned on and have been turned off right now. So all the bits are amazing. So let's start the bike now. Neutral. Yeah, just hear the sound. Just driving the bike now, कुछ पता नहीं चलने वाला है, because when we will be riding this bike ना, चलाएंगे ना, तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ना ये जो आवाज़ करती है ना, दैट्स अमेजिंग, जो हम चलाते वक्त दिखाने वाले हैं. Also this bike has 5 colors on offer, yeah, nationally, so international is okay. 5 colors on offer, and this is of course the signature color, and 3 variants also. So mid, top and the base. So ना literally अगर मुझसे पूछते हो ना आप, this variant is amazing यार, गज़ब लग रहा है यार. Also the ex showroom of this one, दिस Guerrilla 450 बेस मॉडल हैपन्स टू बी 2.39 lakhs. एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ. एंड द टॉप विच इज़ दिस वन गोज़ अराउंड 2.54 lakhs. या 2,54,000 एक्स शोरूम जाएगा. सो ऑन रोड डिपेंड्स एज योर स्टेट, सो आई वॉन्ट टेल दैट, बट एक्स शोरूम इज़ काइंड ऑफ दिस स्टफ. सो दिस वॉज द proper detailed walk around of the all new Guerrilla 450. If you like this, do share and do subscribe. And इसके राइडिंग प्लाट से भी हम मिलने वाले हैं. सो जल्दी हम गाड़ी चलाने वाले हैं. सो चलाने में कैसी है, पिकअप कैसे लेती है, पंच कैसा है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन, सब कुछ देखने वाले हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर माई डेली अपडेट्स. सो मिलते हैं जल्दी इसके राइडिंग पार्ट से. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.